Namaskar to all the officials of NCERT and CBSE and all the teachers from CBSE and across the country. As a follow-up of National Education Policy 2020, uh, we have been interested with the responsibility of developing four national curriculum framework. One is for early childhood care and education. Second is national curriculum framework for school education. Then national curriculum framework for teacher education and national curriculum framework for adult education. And for that, national steering committee had been set up by Ministry of Education to guide us in this process. And with the guidance and support of the National Steering Committee, I must inform you with much pleasure that we have brought out this National Curriculum Framework for Foundational Stage 2022. और आप सब ने देखा भी होगा इसे 20 अक्टूबर 2022 को हमारे ऑनरेबल शिक्षा मंत्री जी ने लॉन्च किया था। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, what are its features, what it is suggesting for the foundational stage, and what is the importance of even foundational stage. So there is a brief presentation. I just want to request my technical team to start the presentation. So this presentation actually includes vision, pedagogy, approaches, and details about learning outcomes which have been included in the foundational stage curriculum. So first of all, we need to see that how this is National Curriculum Framework. It is the cover page of National Curriculum Framework for foundational stage. You can see that all the children are very happily playing and looking at the sky, some kind of bird or some kind of aeroplane. So now this is today we will be interacting on vision, pedagogy, approaches, and learning outcome. Let us see. You see how the vision of national policy on education translates into curriculum framework, then syllabus, and then at the school level and capacity building. So one can see that first of all, policy perspective of policy translates into the national curriculum framework, and then it further translates into syllabus, textbooks, and other supplementary material, which we are now naming learning teaching material. And then we used to do capacity building program or orientation program for the teachers, for the entire stakeholders who are responsible for translating those perspectives up to the grassroots level. And then finally, transformation happens at the school level. So this is the linkage among policy and the transformation at the school level. So this we need to understand. Sometimes we often say that पता नहीं कहाँ से ये रिकमेंडेशन आ गई है और हमें इसे लेकर जाना है और ग्रास रूट लेवल पर हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है. दिस इज टू डिफिकल्ट टू डू दैट, but these recommendations are always come with thorough discussion and thorough interaction and as per the need of the society, because society is ever changing, and as per the societal changes, education need to change. So whenever this policy perspective is there, there is a set process to translate it into the at the grassroots level. So now you can see what is the role of national curriculum framework. So role of national curriculum framework, whenever you will see the foundational stage curriculum framework, you will find that
it describes areas of learning. It describes learning outcomes, that what learning outcomes we are expecting from children. It describes core essential skills, how they can learn and how they can perform. It also describes about teaching learning and learning teaching material. This is the role of national curriculum framework. It also gives us pedagogies. It also gives us evaluation and assessment perspective for holistic development, and also gives us guidelines for teacher education corresponding to all the stages of school education. So this is the role of national curriculum framework. And when you have this national curriculum framework in your hand or online you are reading that, you need to see that there are objectives of this curriculum framework. It is not a document which just give you some chapters on some themes. It actually includes that how can we transform the whole education system. So then and I just want to mention you that the national curriculum framework has been developed after thorough discussion at the district block level, to national level surveys and state level mobile app survey. And in this process, across the country, whether it is CBSE, whether it is NIOS, whether it is different ministries, they all have contributed and they all have given their inputs for the national curriculum framework for the foundational stage. And those inputs have been analyzed by the National Steering Committee as well as NCERT, and we have come out with this document. So now let us see that what is there at the in the ECC or foundational stage, and why we are calling it now foundational stage. That also we can see that we are at NCRT and at the National Steering Committee, it is thought of taking years from 3 to 8 years, and that policy is saying foundational stage. So we have come out with national curriculum framework for foundational stage, and ECC includes that foundational stage. So why this stage is very, very important? You can see that brain development, and you all know that brain development, maximum brain development happens at this stage. And school preparedness, we prepare our children for school education, and we are, and moreover when they are prepared well at the school level, they really do very well in the learning outcomes. And of course this leads to the employability skills when they are grown up and they want to go into the world of work. Of course this further reflects in the overall growth of the country, और ये पूरी के पूरे देश की ग्रोथ में बहुत कंट्रीब्यूट करता है. तो यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि फाउंडेशनल स्टेज या कि आधारभूत जो स्तर है हमारा शिक्षा का, ये जो स्टेज है ये हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज है. So now we need to see that what are the transformative aspects of national curriculum framework. It is very important. You can see that there is a really shift in the perspective of education now in the country, as per the need of this requirement of the Indian society. So we have taken in this curriculum framework aims of education, curricular goals, competencies and learning outcomes, because national education policy is very clear about competency based education, and I know CBSE has also made so many efforts towards that. So national curriculum framework is clear and it shows flow and interconnectivity among these aims, curricular goals, competencies and learning outcomes. Further, it gives us
ancient Indian perspective of holistic development. So we used to call cognitive development, physical and motor development, aesthetic development, social and emotional development, but we never thought of the genesis of this. Genesis lies in Indian education system, and our Tatri Upanishad clearly mentions about Panchkosh Vikas. So we have five sheets, five layers, and these layers we can develop through education, so that a holistic education of children, we achieve the objective of holistic education of children, holistic development of children. Now, what are these panchkosh? One can see that the first layer, first kosh of our personality is Annamaya Kosh. So this relates to health and well-being, or physical and motor development, and this provides us energy. So then Pranmaya Kosh comes, and then comes Manomaya Kosh, social emotional development. And when child is socially, emotionally feeling nice, then the child can read, write, study well. And then comes Vigyanmay Kosh, or Vijnanmay Kosh, we say. And at last, the last Kosh is Anandmay Kosh. This is bliss. Then when we learn things, we really feel happiness. We really are at peace, because we understand things, and we enjoy the joy of learning. So this national curriculum framework is beautifully explaining, and of course, how children learn at the foundational stage. I know you all teachers are very innovative, very creative, and you use toy and games pedagogy at your level, and you have many innovative toys and games, and you also guide students to prepare that. And the same perspective foundational stage curriculum framework is also giving, okay, let us integrate or focus on toy and game based pedagogy, because there is a shift now. Policy is saying the whole education should be play based education at the foundational stage. There is flexibility in approaches. Now we are not promoting only one theme based approach, or only one storytelling approach. You should mix approaches while dealing with children at the foundational stage: storytelling, thematic, project based. So these mixed approach, eclectic approach we can take. Principles of pedagogy also is their Panchpadi. That is also from our Indian education system, and you can find out whatever you are doing. You introduce chapter, you do conceptual development, so you also expand your topic, and then you recapitulate, and then you further communicate to children. So those kinds of steps have been given very nicely in the national curriculum framework for foundational stage under Panchpadi, Panch Pad. So national curriculum framework for foundational stage is also giving us a guideline on organizing time for integrated learning. So very nicely, exemplar timetables are also there. And of course, you must be having Vidya Pravesh, you must be having is promoting, and it says that let the child observe environment, and he will connect, or she will connect with the environment, and understand and develop sensitivity towards that. Then empowering teacher, variety of illustrations are there, early identification of disabilities we are promoting, and then guidelines for curriculum developers or developers of syllabus and learning teaching material are also very nicely included. So if you want to develop some teaching learning material on your own, you just go through that curriculum framework and cull out the guideline and develop, and you will find that that learning teaching material will be inclusive, will be attractive, and will be based on the perspective of the national curriculum framework. Now let us see that 13 curricular goals, this at the foundational stage, this national curriculum framework is promoting, and these are the curricular goals, we have mapped with domains.
and you can say that Kosh also. We have mapped with Annamay and Pranmay Kosh the whole physical and development, motor development domain. And then curricular goals are there. Children develop habits that keep them healthy and safe. Now, earlier we used to what we used to do, that we have some activities, we conduct some activities, we take some textbook or some material, and we try to play with children, or try to conduct activities, and then we try to ask questions to children, and of course observe that whether they have understood the activity or not, whether they have learned the activity. But now you have to see that whether children have developed the competencies or not, whether they are indicating learning outcomes or not, and whether they are slowly moving towards achieving the curricular goals or not. So now you have this challenge to see that children are developing holistically. So ये हमें बहुत देखने की ज़रूरत है. तो यहाँ पर जो ये आपके पाठ्यचर्या जो गोल्स दिए गए हैं, ये जो लक्ष्य दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं कि ये चिल्ड्रन जो है हैबिट्स डेवलप करेंगे जो कि उनको हेल्दी और सेफ रखेगी. तो वो चाहे खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी फिटनेस से रिलेटेड हो, उनके गेम से रिलेटेड हो, उनके छोटे मोटे एक्सरसाइजेज से रिलेटेड हो. चिल्ड्रन डेवलप शार्पनेस इन सेंसोरियल परसेप्शन. ये फाउंडेशनल स्टेज में देखना बहुत ज़रूरी है. हम इसीलिए उनको इस तरीके के एक्सरसाइजेज देते ताकि वो अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकें, उनके जो सेंसेस हैं वो और ज़्यादा जो है वो शार्प हो सकें. और उन्हें हम टेस्ट कराते हैं, उन्हें हम जो है वो स्मेल करने के लिए देते हैं. दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑल्सो वी नीड टू सी. चिल्ड्रन डेवलप अ फिट एंड फ्लेक्सिबल बॉडी. दीज आर द 3 एम्स under physical and motor development. And of course, under social, emotional, ethical development, children develop emotional intelligence, the ability to understand and manage their own emotions and respond positively to the social. This is very important. If we can develop this from the foundational stage itself, you will find that they will be good adolescents in future, because they will be able to know that whether they are angry, whether they are happy, whether they are liking this thing, whether they are disliking this thing, and you can help them to develop this. Children develop a positive attitude towards productive work and service or seva. This is very important. We all often talk informally that these days these kinds of sense is not there. आजकल हम लोग बड़े बूढ़ों की भी सेवा नहीं करते. आजकल हम लोग ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को भी नहीं समझते. हम आपस में बहुत इनफॉर्मल टॉक करते हैं, पर हम ये नहीं समझते कि इसकी जड़ कहाँ है और ये कहाँ से हम इसको आगे लेकर जाएंगे. तो वो हमें देखने की बहुत ज़रूरत है कि हम क्या ये वाले करिकुलर गोल्स के अंदर छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जिससे बच्चों का एनिमल्स के प्रति प्यार बढ़े, जिससे बच्चे समझ सकें कि ज़रूरतमंदों की कैसे जो है वो हेल्प की जा सकती है. तो ये क्लास से शुरू हो सकता है और उसके बाद ये हम स्कूल के बाहर भी जा सकते हैं. चिल्ड्रन डेवलप positive regard for the natural environment around them. This is very, very important because around us we have trees, we have lot many natural animals, and they have to. Then we come to cognitive development. Under cognitive development, we can take mathematics, we can take environmental understanding or concern. So children make sense of world around through observation and logical thinking. Of course, when children observe environment and some phenomena of environment, they can see that and they can come out with logical why this is happening, where is the cause, so that this effect is there. So that comes under cognitive development. And though we don't give textbook for environmental studies in class 1 and 2, and of course but we integrate environmental concerns from 3 years onward so that children understand that. Then language and literacy development is very, very important. This is also a domain, and curricular goals are children develop effective communication skills
for day-to-day interaction in 2 languages. So we are naming here L1 and L2. This may vary from states to states. That policy is giving flexibility, and maybe for CBSE schools, they have their own language policy. So but language one is the language which children is familiar with, and when it comes to school, the way we uh, uh, give children, or the way children learn L1, since it is familiar to children, so maybe we can give some kind of higher level activities. But for language 2, since it is children are not aware of that, we have to see that at that level we need to give activities up to the coinciding with the abilities of children in that language. So that we need to see all the teachers. Then there is a domain aesthetic and cultural development, that is Anandamay Kosh. And here the curricular goals is children develop abilities and sensibilities in visual performing arts. And you all know that when children sing, when children dance, when children paint, they really feel happy, and it is really bliss. So that layer also we need to develop. And of course, one more domain this national curriculum framework for foundational stage is promoting, that is developing positive learning habits is in children. Once we will develop this positive learning habits, they will do wonders in school classroom. So these are the curricular goals and domains. So now you can see how competencies are mapped, and what is the linkage with learning outcomes then. So if you see, domain is socio emotional ethical development. This is the domain. And what is the course? It is manomay course. Now curricular goal, if you take curricular goal 4, कि children develop emotional intelligence, the ability to understand and manage their own emotions and respond positively to social norms. So what should be the competencies at the foundational stage? This goal will not stop here. This goal will go to higher stages as well. But competencies at the foundational stage may be different from higher stages. Learning outcomes may be different from higher stages. So that we need to see that. So we need to be very, very clear that we have to develop these all competencies under that goal. Otherwise, there will be gap when the children will go to higher stages. So now, what is the competencies? Now, I'll just give one example. I think presentation will be shared with all of you. Now, when children starts recognizing self as an individual belonging to a family and community. So this is a competency that the child is starting recognizing self as individual belonging to family and अपने परिवार में और अपने समाज में वो क्या है, ये वो धीरे से पहचानना शुरू करता है, ये कॉम्पिटेंसी. और इसके लर्निंग आउटकम्स बहुत सारे होंगे. लर्निंग आउटकम्स ये भी हो सकता है कि डेमोन्स्ट्रेट अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, अपनी जो है वो अपने आप को वो जानता है, इसकी वो अवेयरनेस शो कर सकता है. कैसे? ये मेरा पसंदीदा खिलौना, ये मुझे पसंद है, ये मेरी पसंदीदा शर्ट है, ये मेरा अच्छा दोस्त है, या ये मेरी कॉपी है, ये मेरी किताब है. अब ये छोटे बच्चे, हमें यहाँ से लेकर सेल्फ से लेकर उसे सोशल अवेयरनेस, सोशल सेल्फ अवेयरनेस तक भी लेकर जाना है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक भी लेकर जाना है. लेकिन शुरुआत में वो इसी तरह से आपके सामने लर्निंग आउटकम प्रेजेंट करेगा. इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, तो यहाँ हम देखते हैं कि चिल्ड्रन डेवलप effective communication skills for day-to-day interaction in 2 languages. ये हमारा करिकुलर गोल है. अब कॉम्पिटेंसी क्या है? अगर हमने कॉम्पिटेंसी ये लिसन्स टू एंड अप्रिशिएट्स सिंपल सॉन्ग्स, राइम्स एंड पोएम्स, ये कॉम्पिटेंसी है. लिसनिंग इज अ स्किल, लिसनिंग इज ए कॉम्पिटेंसी. और यहाँ पर फिर हम
देख सकते हैं कि बच्चा वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स को सुनता है। अब सुनने से आपको पता नहीं चल पाता कि वो अ, सचमुच सुन रहा है कि नहीं, लेकिन जब वो रिपीट करता है तब आप समझ जाते हैं कि वो सुन रहा था। तो उसका पहला लर्निंग आउटकम भी क्लियर हो जाता है और दूसरे लर्निंग आउटकम को भी आप देख सकते हो। तो यू हैव टू सी now in this way the whole foundational stage, which is competency based, and you will find it very very easy and smooth when you will be seeing changes in your children. जब आप अपने बच्चों में चेंज देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लर्निंग थ्रू प्ले कौन सी चीज़ें हो सकती है? क्या प्ले केवल गेम्स और स्टोरीज ही है? नहीं, we are not telling that only games and stories are the play, but there are n number of activities, conversation. Do converse with your children. छोटी छोटी बातें करिए, बहुत सारी। और और आप देखिएगा कि बच्चे बहुत ही खुशी खुशी आपसे बात करेंगे और खुलेंगे क्लासरूम में। और सबसे पहले तो उनका डर हमें हटाना है। उन्हें कहानी सुनाइए और कहानी का एंड छोड़ दीजिए, एंड मत बताइए। कई बार अगर आप उसके क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट करना चाहते हो, छोड़ दीजिए। अब पूछिए, बताओ एंड क्या होगा? देन दे विल कम आउट विथ इनोवेटिव आइडियाज एंड नोट डाउन दोज आइडियाज। मेक पोर्टफोलियो ऑफ चाइल्ड कि किस बच्चे ने बहुत ही इनोवेटिव आइडिया दिया। और समझने की कोशिश करिए। हो सकता है वो गिफ्टेड चाइल्ड हो, और हो सकता है वो टैलेंटेड चाइल्ड हो, और हो सकता है कोई ऐसा बच्चा भी हो जिसकी जिसके ग्रोथ में और इसके डेवलपमेंट में डिले हो। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बच्चे को ऑब्जर्व करना है और देखना है। आप अपने खुद की छोटी छोटी एक्टिविटीज के थ्रू टॉय बेस्ड लर्निंग, आप एक टॉय, एक पपेट, एक गेम के थ्रू एक टॉय बच्चे को दे दीजिए। सारे बच्चों को कहिए इस पर अपनी अपनी बातें बताओ। You will really amazed that children will come out with so many stories about the toys. You give a puppet, tell children to do role play with the puppet. So you will develop language, you will develop mathematics, you will develop environmental concern through toy based pedagogy. And please map these toys which you are going to use in classroom with skills, with competencies, with curricular goals. Songs and rhymes, I need not to say, I know that you people are doing lots of singing and rhyming in the classroom, music and movement, art and craft, indoor games, outdoor games, spending time in and with nature, field trips. बहुत छोटे बच्चे हैं, आसपास लेकर जा सकते हैं। And organizing the environmental awareness program, that we need to see that play includes all this. So then we come to this pedagogy, as I have already told you. So first, at the first hand, teacher need to plan that how he or she will be going to take this class, and then build positive relationship with children. That is very very important, and this will develop your competency also. Learning through play. Plan the class in that manner. Plan the learning, make a learning plan on that. Strategy for literacy and numeracy. And also see that you are going to strengthen their literacy and numeracy through various activities. And create positive classroom environment. That is very much needed because children learn in the positive classroom environment. Then approaches related to language and literacy. So we have already uh, uh, told you that children learn in their familiar language very much more than they learn in second language. Second language we introduce slowly, and first of all we give first an experience to children in first language. So reading, writing, speaking, listening. So what is the approach that we are going to see that now? We need to see that first we need to give opportunity to children for listening, and then we can give children possible opportunity for speaking, and then come to
reading or some picture book and then come to writing. So that we need to see that what 4 block approach we are going to take in language learning, and we have used in this foundational stage curriculum framework balanced literacy approach. So through activities we are also uh, uh, we are also seeing that they develop all these skills. Then we are also giving approaches to teaching mathematics. So at the first hand, give experience uh, with uh, experience on mathematics around them. Then come to spoken language. Then you come to tell them something about numbers or something about things. Then you come to uh, oh, spoken language means that you can talk to children about mathematics. First hand, you are giving experience, then you are talking to children about mathematics, use of mathematics, and then you are giving them pictures, exposure to pictures, and then written symbol. So these are the approaches, a national curriculum framework for foundational stage. And of course, some of the components also have been given, that number and its relations we need to see. We need to see basic mathematics operations, shapes and spatial. Of course, later or sooner you will be getting syllabus and textbooks also for classes 1 and 2. And we have also come out with Anand Balwatika activity book and trainer's handbook also. So in those kinds of material, you will get all these approaches in detail and with example. So so here also we are using blockwise approach. Block 1 oral maths, block 2 skill teaching, block 3 skill practice, and then block 4 maths game. So these are the blockwise approach. And now we are coming to assessment. So though holistic assessment policy is very methodically saying that we need to come out with holistic progress card and holistic assessment need to be there. Now what shall we do for that? We need to have checklist so that we can see that whether children are achieving competency, developing competencies or not, showing that learning outcomes or not, which you have thought for the competency to develop. Learning outcomes can be contextualized. Then event sampling, you can see that children at different events, how they behave, how they learn. Portfolios, photographs, artifacts, and work samples, you have to keep it. Those children who are doing well or those who think that they need some support, worksheets. So, and you have to analyze responses for teaching, learning, and then you have to do documentation and communicating assessment. So these kinds of things you need to do, since it is holistic development, your observation is much more important than anything else. And that holistic progress card or holistic progress card guideline, when it will come, it will be released, you will get more detail on that. So guideline for curriculum developers, I have already told you that mixed approach is now being used. So not only textbook, there are lots of variety of teaching or learning teaching material will be there for the foundational stage. Earlier also it was there, but now with more focus on NEP 2020 perspective, play-based activities, and cultural rootedness, which is very important. Children need to be connected to their culture. So that we need to see. Early identification of disabilities, I have already explained you. When you will work with children, sometimes you will find that some children are learning very slowly, some children are not able to understand something, and some children are not doing eye to eye contact. So what to do? So it means that you have to note down that kind of their symptoms and these behaviors, and then taking into confidence their parents, you can inform them and take help. And
if you can improve yourself, because if you are finding that only this is a temporary problem, children has not not in children has some fever, or he is not well, that's why he's slow. So those kinds of problems you can resolve at your own level. Otherwise, now there is also a precious app which screens uh, delays in disability, delays in development and disabilities. So that app also you can use for screening. Then physical and emotional security of children, this is very important, and you have to see that children must feel safe and secure, and you need to see that whosoever are around children, they do appropriate behavior. In case you notice that, you must report that behavior to your authorities. So those kinds of things you need to see, because it is foundational stage, and you have to be most caring, most responsible. So that foundational stage is giving us this kind of perspective. And you can see, you cannot leave foundational stage in isolation with other stages, because foundational stage is very much connected with preparatory stage. And in our system, many teachers who are dealing with foundational stage, they are also dealing with preparatory stage. So you need to see that whatever you are doing at the foundational stage has implication for preparatory stage. Here, if children have developmental domains, of course, because here development, we are focusing on development more, and at the preparatory stage and how much higher stage, there may be more curricular areas. Typical subjects there will be, maybe in multidisciplinary manner, but there will be social science, there will be science, there will be environmental studies. Then concrete, here you are doing concrete operation, but then you will have to take abstract content. Here you are seeing that this is learner centric, but there that will be self-directed. The children need to see that how they are learning. And teacher observation, you are doing teacher observation, assessment through teacher observation, but next step, you will be giving assessment tasks. So that you need to see that how you will look forward to preparatory stage while developing children at the foundational stage. So now this is a supportive system. This is a, of course, whatever we are implementing, we have to make our support system. And I think CBSE notification, as Ram Shankarji has already said, that we need to see that what kind of infrastructure is needed, what kind of role parents and community will play. So that you need to see what kind of appropriate environment we can provide for learning. So those kinds of things we need to see. So now, what initiatives we have taken as a follow-up of National Curriculum Framework? That very briefly, I want to tell you that after this National Curriculum Framework for Foundational Stage, we developed a lot of learning teaching material, including Unmukh trainers handbook for Balvatika and Anand activity book. Then we have also come out with a collection of learning teaching material, Jadui Pitara. You might have seen that. And NCRT had also conducted 5 days capacity building program on Jadui Pitara. I will be sending on NCRT official, live official. And I think Ram Shankarji can share link with you on the whole presentation on Jadui Pitara. We are also in the process of developing syllabus and textbook for classes 1 and 2. And then orientation and capacity building of teachers working with children at the foundational stage is an ongoing program. We are doing it. But believe me, we have faith in our teachers. We know that they are much more innovative and creative than we expect from them. So we know that just looking at the foundational stage curriculum framework, they can do wonders in their classes and in their setup. So implementation of National Curriculum Framework for foundational stage in Bal Vatika at KVS, CBSE school, and in other setups. And you have you now you are there when CBSE has taken very important step in this direction. So now very briefly, I just want to
give you uh, uh, give you principles of learning teaching material at the foundational stage. Whenever you develop a learning teaching material, maybe in the name of Jadoo Pitara, Jadui Peti, Jadui Box, whatever name you want to give as per your context and which children like, play is at the core. Collection and variety. Please use variety. Age appropriate. Material should be age appropriate. Attractive for children and teachers. Easy to use. Simple language. Use multiple languages, whatever you are giving. If you are giving stories, uh, because in your class also children are there from different language background, so let us see that how we can collect some stories in different languages, and just giving children respect to their language so that they learn more and more, and easy to create. Then also principles of learning teaching material at the foundational is these some more principles we include, that these are mapped with curricular goals, must be mapped. Our Jadui Pitara, all the material is mapped with curricular goals and competencies. There is vertical linkages and horizontal linkages. One material can have impact for the other year. Children, suppose 3 to 4 years, that has linkage with 4 to 5 years also. And of course, horizontal linkage like mathematics, literacy, numeracy, and other domains are integrated. Inclusive, all the materials are inclusive, culturally rooted, and that you have to also see that that should be culturally rooted. This children need to see that there should be Indian perspective, Bhartiyata, and then can be developed, procured और collected. ये develop भी कर सकते हैं, किसी से ले भी सकते हैं, और बना भी सकते हैं, और और ये आपको सारे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, सारे कोश के डेवलपमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा जो भी मटेरियल आप कलेक्ट करें. तो जादुई पिटारा क्यों हमने नाम दिया? बच्चों को ये नाम बहुत पसंद आता है, समथिंग जादू, मैजिक, तो इसीलिए ऐसा नाम दिया गया कि बच्चे और टीचर भी इसको जो है बहुत इंटरेस्टिंगली इसको देखें, इसको यूज़ करें. तो ये इसका था. और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स, स्टोरी बुक्स, पोस्टर्स और एक्टिविटी बुक्स, पपेट्स, टॉयज और डोमिनोज, क्विज़ेस, पजल्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें डाली हैं. मैगजीन्स भी डाली है. आप सब अपने अपने लेवल पर भी बना सकते हो. हम भी इसे जो है वो एक मॉडल के रूप में बनाने जा रहे हैं. वी आर इन द प्रोसेस. ये हमारे प्रोफेसर मंजुल भार्गव, जो कि हमारे नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में हैं, ग्रेट मैथमेटिशियन, ही हैज़ गिवन अ जादुई मैजिक ट्रिक. वो मेढक, जब ये कार्ड हम लोग रखते हैं तो वो मेढक जो है, एक मेढक गायब हो जाता है, और ये बहुत ही लोगों को पसंद आई. इस तरह की और जादुई ट्रिक्स जो है आप अपने लेवल पर इनोवेटिवली, क्रिएटिवली कर सकते हैं. और कैसे आप यूज़ करेंगे? ऑफ कोर्स आप आप प्लान करिए, आप किन डोमेन्स को लेने जा रहे हैं, किन करिकुलर गोल्स को लेने जा रहे हैं, उसमें आप कौन कौन से मटेरियल यूज़ करेंगे और किस तरह से मिलाकर यूज़ करेंगे, और इस तरह से आप अपने जादुई पिटारा को यूज़ कर सकते हैं. एक ही खिलौना, एक ही कार्ड आप 2-4 तरीके से यूज़ कर सकते हैं. ग्रुप एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, इंडिविजुअली दे सकते हैं. उसमें आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज आई नो दैट यू आर much more pedagogue than us. So डिजिटल जादुई पिटारा भी है. आप दीक्षा पर जाइए, आपको डिजिटल जादुई पिटारा मिलेगा. उसमें क्या क्या है वो आपको मिलेगा, तो आप देखिए. हम लोग और उसको जो है ओपन रिसोर्स की तरह बहुत जल्दी ही आपके सामने लाने वाले हैं. सो बट यू कैन ऑलवेज विजिट दीक्षा फॉर दैट. एंड बहुत सारे जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल कंटेंट और जादुई पिटारा से स्टोरीज विद ऑडियो, एनेबलिंग इंक्लूशन, डेमोन्स्ट्रेशन और स्टोरी टेलिंग, ये सारी बातें आपको दीक्षा पर मिलेंगी. वन स्टोरी इन ISL ऑल्सो, हम लोगों ने इंडियन साइन लैंग्वेज में भी एक स्टोरी दी है. फ्लैश कार्ड्स आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो. फ्लैश कार्ड्स विद साउंड भी हैं,
प्ले बुक्स अवेलेबल टू बी प्रिंटेड लोकली, और हैंड बुक्स भी हैं, और कुछ और मटेरियल हम लोग बहुत जल्दी ही और डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने डिजिटल कंटेंट में जादुई पिटारा में दीक्षा पर डाली हुई है। आप भी अपना जादुई पिटारा बना सकते हो, और आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपको कैसे बनाना है। आप गेम्स, पपेट्स, टॉयज कलेक्ट कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, डोमिनोज। आपके पास वैसे भी फाउंडेशनल स्टेज पर कुछ और होंगे, कुछ कुछ चीज़ें अवेलेबल होंगी, कुछ और बना सकते हैं जो कि बच्चों को और अट्रैक्ट करे। स्टोरी बुक्स और अच्छी ली जा सकती है। सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर जस्ट टू create conducive environment of learning for children. ये बहुत सारे खिलौने जो है हमने जादुई पिटारा में डाले हुए हैं, और ये खिलौने बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अब what steps you can take to implement NCF FS? So सबसे पहले तो आपको thorough understanding on curricular goals, competencies and learning outcome कर लेनी है, ताकि आगे आने वाले समय में अगर पूछा जाए कि आपके बच्चों में कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज है, तो आप बहुत इमीडिएटली बता सको, क्योंकि यू नो कॉम्पिटेंसीज ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड, एंड दैट कॉम्पिटेंसीज आर मैचिंग विद द करिकुलर गोल्स which are a national curriculum framework for foundational stage is giving. आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए कॉलीग टीचर्स के साथ फॉर बेटर इंटीग्रेशन ऑफ लिटरेसी, न्यूमरेसी, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, और दूसरे दूसरे कोशों को भी अगर आप साथ में लेकर चल रहे हैं, और लेकर चलना ही है, तो आपको मिलकर काम करना पड़ेगा। और आप डायलॉग्स आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि पेरेंट्स और कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। आप उन्हें भी समझा सकते हैं कि कैसे प्ले बेस्ड लर्निंग को घर में प्रमोट करें, रादर देन सेइंग दैट ज़्यादा खेलता है, बिल्कुल नहीं पढ़ता बच्चा या पढ़ती है। तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जो हम स्कूल्स में प्रमोट करने जा रहे हैं वही हमारे घर में भी बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कि घर में कहा जाता है कि प्ले खेलना नहीं, और स्कूल में कहा जाता है खेलना। वो हमें देखने की ज़रूरत है। और डेवलपमेंट ऑफ वेराइटी ऑफ लर्निंग टीचिंग मटेरियल इंक्लूडिंग टॉयज एंड गेम्स, टेकिंग केयर ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन, ये आपको करना है। और ये आप अगर करेंगे तो आपके लिए जो है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये एक छोटा सा कोट है, वी वॉन्ट दैट एजुकेशन बाई विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। और अगर आप देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज और जादुई पिटारा इस थिंकिंग की तरफ और इस एक्सपेक्टेशन की तरफ ही एक और स्टेप है, और और ये बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत मदद करेगा। एंड वी एक्सपेक्ट दैट वी ऑल विल जॉइन हैंड्स टू ट्रांसफॉर्म द होल स्कूल एजुकेशन एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। थैंक यू। Thank you so very much, Ranjana ma'am, for your detailed information and valuable words. Thank you so very much. मैम यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जो हमारे व्यूवर ने भेजा है, और वो जयाश्री हैं, वो आपसे जानना चाहती है, वेयर कैन वी गेट एक्सेस टू बाल वाटिका एक्टिविटीज एंड ट्रेनिंग हैंडबुक्स मैम? ओके, हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगी और अपलोड भी कर दी जाएंगी। तो आपको बहुत ही जल्दी ये उन्मुख और आनंद, आप एक बार देख भी लीजिएगा दीक्षा पर, एनसीईआरटी वेबसाइट पर भी हम चेक कर लेंगे, हम लोग उसे अपलोड कर देते, सो दैट यू कैन गेट एक्सेस टू बाल वाटिका ट्रेनर्स हैंडबुक एज वेल एज आनंद, और हार्ड कॉपीज भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी आपको। जी, तो मैम ये तो बात हुई बाल वाटिका की, एंड जयश्री वो was asking the question. We still have a lot of time right now. So what else would you like to share with all our viewers and students and teachers, ma'am? If our viewers have some more questions, I would be happy to take those questions, or otherwise we can talk more about this Jadui Pitara. Sure, ma'am. That what can we do for Jadui Pitara more and more. So now
when we were developing our Jadui Pitara, so we were thinking of what kind of things we need to collect, we need to give. And of course, you see, all the children have different contexts. सभी बच्चों का जो है अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, वो अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं। तो जब आप लोगों ने, पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, जादुई पिटारा पर जब लॉन्च हो रहा था, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लॉन्च के समय जो है इकट्ठे हुए थे। जी तो जब वो बहुत सारे बच्चे लॉन्च के समय इकट्ठे हुए थे, जब हमारे ऑनरेबल शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप अपने अपने पसंद के जो है वो खिलौने ले लो, तो आप देखोगे कि वो बच्चे ने अपने अपने पसंद के खिलौने ले रहे हैं। वो ऐसा नहीं कर रहे कि पहले वाले का खिलौना ले रहे हैं या जिसने वो जी चुना। और उसके बाद जब वो खिलौना लेकर बैठे, तो जितनी देर तक वो वहां बैठे रहे, वो अपने खिलौनों से अपने ही भाषा में और अपने तरीके से बात करते रहे। तो यू कैन सी दैट हाउ चाइल्ड गेट एक्टिव when the child comes in contact with some material which is of interest. So वो लेकर बैठता है, वो उससे अपने आप को रिलेट करता है, वो बात करता है। और हम फाउंडेशनल स्टेज में यही तो चाहते हैं कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट हो, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हो, उनकी जो है वो लिटरेसी और न्यूमरेसी का भी जो है उनका, या लैंग्वेज एबिलिटी का डेवलपमेंट उनका बहुत अच्छा हो पाए। और इन सब चीज़ों के लिए हम केवल टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट डोमिनेटेड अप्रोच अगर हम यूज़ करते हैं, तो वो शायद बच्चों को उस पूरे एजुकेशन जो उसका क्लासरूम है या उसका लर्निंग जो सिनेरियो, उसको बहुत ही मोनोटोनस कर देता है, और बच्चा पढ़ने से इंटरेस्ट खो देता है, और फिर हमें वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उसे पढ़ाने की तरफ लेकर जाना पड़ता है। तो वाई कांट वी मेक देम रेडी टू लर्न? वी फर्स्ट ऑफ ऑल we give interesting things or present interesting things before them, so that they can themselves manipulate those toys, they can handle those toys, they can learn by doing those toys. So that we need to see. So these were the objectives and perspective of before behind this Jadui Pitara. And Ma'am, here I'm yeah. interrupting you. I'm so sorry for that. We have one more question from Ruby, our viewer, and she just wanted to know that can you please upload new presentation? Ruby, we would appreciate if you please explain what presentation you are asking about to upload. एंड मैम है आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट जादुई पिटारा। आप जादुई पिटारा के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इंक्लूजन की, तो इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, अगर हम इसकी बात करें तो क्या कुछ बातें आप शेयर करना चाहेंगे मैम? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। जादुई पिटारा डेवलप करते समय हमें ये भी एक ख्याल रहा कि जो बच्चे देख नहीं सकते है ना, उनके लिए हम क्या करें। फ्लैश कार्ड अगर हम देते हैं तो क्या, तो हमने उसमें उभरे हुए फ्लैश कार्ड्स बनाए, ताकि वो बच्चे अक्षरों को हाथ से टच करके जान पाए कि ये कौन से अक्षर हैं। और इसी तरह से अगर आप देखिए तो दीक्षा पर जो है हमने ऑडियो बुक्स दी हैं, और हमने ऑडियो स्टोरीज भी दी हैं। और दूसरी बात है, हमने दीक्षा पर एक स्टोरी जो है पूरा इंडियन साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दी है, जिससे कि जो बच्चे नहीं सुन सकते, वो जो अपने साइन लैंग्वेज से जो है स्टोरी को समझ सके और सीख सके। तो हम लोग के तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बट आप अपने लेवल पर, अपने कॉन्टेक्स्ट में, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से आप जो है वो उनके लिए मटेरियल डेवलप कर सकते हैं। और वैरायटी ऑफ, ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह के मटेरियल सारे बच्चों को देना है, क्योंकि आप ग्रुप एक्टिविटी भी कराओगे, आप इंडिविजुअल एक्टिविटी भी कराओगे, और आप ये भी देखोगे कि जैसे पॉलिसी पीयर लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग की बात कर रही है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप पेयर्स में भी बच्चों को जादुई पिटारा की हेल्प से जो है बच्चों को लर्न करने की अपॉर्चुनिटीज़ दें, ग्रुप्स में भी दे दें, इंडिविजुअल भी दे दें। और तीनों तरह की जो आपकी मेथड्स होंगे, पेडागोजीज होंगी, उस पर आप ध्यान दें कि वो किस तरीके से जो है वो लर्न कर रहा है, वेदर वो बच्चे, क्योंकि हर बच्चे का अपना स्टाइल होता है। जी। कुछ
कुछ सुनकर सीखते हैं, कुछ बोलकर सीखते हैं, कुछ इंटरैक्ट करके सीखते हैं, और कुछ लर्निंग बाय डूइंग। तो हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, और हमें उनके उस स्टाइल को और उस पेस को और गति भी, सबके सीखने की गति भी अलग अलग होती है। तो वो सीखने की गति और उनके स्टाइल को हमें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करना होगा, ताकि वो उस हिसाब से ही बच्चे जो है वो सीख पाए। तो जादुई पिटारा में हमने यही कोशिश की है कि हम उनकी पेस, उनके लर्निंग स्टाइल के हिसाब से जो है वो मटेरियल देने की कोशिश करें, पर ऑफ कोर्स वो एक मॉडल रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट है जादुई पिटारा, इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ लर्निंग टीचिंग मटेरियल। और ये कॉन्सेप्ट आप अपने अपने लेवल पर किस तरीके से रियलाइज करते हो, ये यू हैव टू सी। जी मैम, यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि बच्चे किस तरह से इसमें वो कर सकते हैं पार्टिसिपेट, बच्चों के लिए ही है, नो वंडर। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम पेरेंट्स की बात करें, हाउ दे कैन जॉइन इन जादुई पिटारा मैम? यस, आपने बहुत अच्छी बात कही रेनू। अभी हम लोग G20 में अमृतसर गए थे, जो मीटिंग हुई थी उसमें जादुई पिटारा का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत सारे पेरेंट्स हम लोग के पास आए, जी। बहुत सारे जो प्री सर्विस वाले बच्चे हैं टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के, वो आए, और दे ऑल वर वेरी क्यूरियस। और वो कहने लगे कि अगर इस तरह का एक कलेक्शन हमें मिल जाए तो वी कैन ऑल्सो सपोर्ट चिल्ड्रन लर्निंग एट होम। तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हमें जो है सपोर्ट कर सकते हैं, और ये शायद टीचर्स का रोल होगा, हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होगा कि जब CBSE में जब ये बाल वाटिका की जो स्थापना की बात हो रही है, और सारे के सारे स्कूलों में भी जो है ये हम फाउंडेशनल स्टेज में जो जो 3 से 6 तक 6 साल तक भी सभी स्कूलों में जो है वो हम ये सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। और इवन 1 और 2 में भी, 1 और 2 में भी पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रेडीमेड मटेरियल नहीं होता, और उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा खिलौना ले, कौन सा छोड़े, कौन सा बच्चों के लिए सेफ है, कौन सा खिलौना सिक्योर है, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती। हम जादुई पिटारा जब बना रहे थे तो हमें छोटी छोटी बातें भी देखनी पड़ रही थी, कि वो कोई चीज़ शार्प ना हो, है ना, कोई चीज़ हैजार्डियस ना हो, प्लास्टिक बिल्कुल नहीं यूज़ करना था हमें। तो वो सारी बातें भी हम लोग बहुत ध्यान से देखकर चल रहे थे, क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज इस तरह की जो है वो प्रिकॉशन लेने की बहुत बात करता है। सबसे पहले हमारी कंसर्न है बच्चे की केयर, बच्चे की सेफ्टी, बच्चे की सिक्योरिटी, तो वो हमें करने की बहुत ज़रूरत है। जी मैम, यहाँ पर अब हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा डिटेल में हम जानना चाहेंगे कि व्हाट स्पेशल एफर्ट्स शुड बी टेकिंग बाय द स्कूल प्रिंसिपल फॉर द NCFFS मैम? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों ने लीडरशिप की तो बात इसमें पूरी तरह से नहीं की। ऑफ कोर्स प्रिंसिपल्स का तो बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो ना केवल मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं एक स्कूल में, बल्कि वो इंस्पायर भी करते हैं, वो रोल मॉडल भी होते हैं, और वो उनकी लीडरशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती। हाँ, अब ये ज़रूर है कि वो ये पहचानने की बात है कि आप अपने आप को कितना एम्पावर समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका ये रोल है कि जो टीचर्स आपके फाउंडेशनल स्टेज के साथ डील करते हैं, या आप इवन प्रिपरेटरी स्टेज और फाउंडेशनल स्टेज के टीचर्स को भी साथ बुला सकते हैं, इवन दूसरे स्टेजेस के भी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी है। इस पॉलिसी में साफ साफ कहा गया है कि हमें वी हैव टू गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, वी हैव टू गो अवे फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन। और उनके साथ आप सबसे पहले तो आप इसी पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज पर एक डिटेल्ड चर्चा अपने स्कूल में कर सकते हैं। अपने स्कूल का एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन प्लान बन सकता है कि हमें नेशनल का फाउंडेशनल स्टेज का जो करिकुलम आया है, इसकी कौन सी बातें ऐसी है जो बड़ी कॉमन है, जो कि हम एंटायर स्कूल एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि इंटरेस्टिंग पेडागोजी की बात है, मल्टीपल पेडागोजी की बात है, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स की बात है, तो हम कैसे कर सकते हैं, टीम टीचिंग की बात है। तो एक तो ये स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन, आर्ट इंटीग्रेशन, ये सारी बातें हमने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज में भी डाली। दूसरी बात है, आप
करिकुलर गोल्स भी अपने लेवल पर सोच सकते हो। वैसे बहुत जल्दी हम लोग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन भी आपके सामने आ जाएगा। जब तक आप थॉरो अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप करते हो कि करिकुलर गोल्स, कॉम्पिटेंसी, लर्निंग आउटकम एट द फाउंडेशनल स्टेज क्या है, तब तक आपको स्कूल एजुकेशन का भी मिल जाएगा, तो आपको हायर स्टेजेस के लिए भी करिकुलर गोल्स और ये मिल जाएंगे। तो ये अगर थॉरो अंडरस्टैंडिंग आपके टीचर्स, उसके बाद आप एग्जाम्पलर्स उनसे डेवलप करा सकते हो। भाई ठीक है, आप अगर ये करिकुलर गोल्स के अंदर ये कॉम्पिटेंसीज इस लेवल पर डेवलप करना चाहते हो, व्हाट शुड बी योर पेडागोजी एंड हाउ यू विल डेवलप एंड देन हाउ विल यू असेस। तो अगर आपके लेवल पर एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन प्लान तैयार हो जाए कि भाई हमारे स्कूल में फाउंडेशनल स्टेज पर NCF को हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल होगा, जादुई पिटारा जैसी चीज़ें, वो हमें कलेक्ट भी करनी होंगी और शायद डेवलप भी करनी होगी। उसके लिए आप वर्कशॉप अपने स्कूल में ही कर सकते हैं, बड़े स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं। आजकल बच्चे भी बड़े क्रिएटिव हैं, उन्हें भी हम जो है वो जोड़ सकते हैं। कल आप लोगों ने एक ट्वीट भी देखा होगा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि यूथ और इनोवेटिव यूथ और क्रिएटिव यूथ को जोड़ने की बात हो रही है। जादुई पिटारा से में जो हमने मटेरियल दिया है उनके डेवलपमेंट में और इनोवेटिव मटेरियल बनाने में। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम अपने स्कूल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। स्कूल में ये कंपटीशन कर सकते हैं, बच्चों तुम अपने डिज़ाइन बनाओ जादुई पिटारा का। ये छोटे बच्चों को के लिए ये एक हमारे पास मॉडल है। नाउ यू कम आउट विथ योर मॉडल। सो देर आर मेनी थिंग्स। योर क्रिएटिविटी कैन हैव इट्स ओन रोल एंड ओन स्ट्रेंथ। सो प्रिंसिपल का बहुत बड़ा रोल है। आप सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाइए अपने लेवल पर, और आपको इस मामले और जो भी हेल्प NCERT से जो भी हेल्प आई थिंक CBSE से लेनी होगी, दे वी ऑल आर pro to that, because we want that this foundational stage should be strengthened across the country, so that we can we get a very energetic and uh, uh, self decision makers in our future. Sure, ma'am. And we would like to take one more question from Padmasini K. And she just wanted to know about the mechanism you will adopt, whether it is completely implemented, ma'am. Mechanism for what? I guess when the whole this process will be implemented. You see, mechanism is always NCERT always work with variety of stakeholders. So we have National Steering Committee with us. They are continuously guiding us on the implementation of National Curriculum Framework for the foundational stage. And when we were in the process of developing syllabus and textbooks for the foundational stage, so it was discussed that why not we come out with some kind of learning teaching material which really help transforming the school education at the foundational stage. So then we interacted with the National Steering Committee members. We interacted with many other people, and they have given us some material. And we also developed at our own level, like so many flashcards, so many storytelling. You can see our posters. Even Diksha also, these posters are available. So like गेहूं का सफर. So दैट द होल कहानी ऑफ जो गेहूं की पूरे सफर की कहानी है, उसके बाद पीछे हमने क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो पहले बच्चे के साथ कहानी हो जाती है, या फलों की मौज। अब ये इतना सुंदर पोस्टर अगर आप देखेंगे, वो छोटे बच्चे वो पोस्टर को लेकर बैठेंगे और आपने क्लास में लगा दिया, तो डेफिनेटली दैट विल चेंज द होल क्लासरूम सिनेरियो। तो ये सारी बातें हम लोगों ने की। फिर ये हुआ कि क्या क्या लेकर आना है, तो एन नंबर ऑफ चीज़ें हम लोगों ने की कि नहीं भाई फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए, क्योंकि लिटरेसी न्यूमरेसी भी हमें लेकर जानी है, तो नंबर कार्ड्स होने चाहिए, डोमिनोज होने चाहिए, यानी कि जैसे कैसे नंबर मैच करेंगे। अगर आपने जो है वो सर्कल्स लगा दिए, डॉट्स लगा दिए, तो बच्चों को नंबर मैच करना आना चाहिए। पजल्स होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चे की जो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है। मैनिपुलेटिव्स होने चाहिए। तो ये सारी बातें जो है
फिर हम लोगों ने लिस्ट बनाई, फिर ये देखा कि कौन क्या कंट्रीब्यूट करेगा, फिर इस पर मैनुअल बनेगा, फिर ये देखा गया कि ट्रेनिंग हैंड बुक्स भी ट्रेनर्स हैंडबुक भी बननी चाहिए। अब सीबीएसई को मास लेवल पर ज़्यादा दिन की वर्कशॉप करनी है, तो देयर शुड बी ट्रेनर्स हैंडबुक ऑल्सो, कि वर्कशॉप करें और हम लेकर आए कि कैसे जादुई पिटारा डेवलप करेंगे। तो ये सारी बातें करके और हम लोगों ने ये देखा कि इसे बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है, स्टेट्स में भी बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है, डिमांड बहुत आ रही है, और वी आर इन द प्रोसेस ऑफ we are also in the process of making implementation plan, thorough implementation plan. जी। And I hope that your implementation plan, principles in the implementation plan, if we will get that, will help us to show that principals of CBSE schools are giving us implementation plan of NCF FS. Then only we can say that mechanism is successful. जी मैम, यहाँ पर हम एक और मैसेज लेंगे। जयश्री ने दोबारा मैसेज किया एंड शी जस्ट वांटेड टू नो, वी हैव अ पर्टिकुलर सिलेबस टू बी कंप्लीटेड, देन हाउ डू वी डू इट at this stage? And she also wants to know, can we get curriculum for Bal Vatika? Of course, from 3 to 6 year also, we are coming out with, we are calling it syllabus, although this is curriculum for them, since we are covering the whole foundational stage. So that's why we have, we may name it syllabus for the foundational stage. And you can see that you have curricular goals, you have competencies, you have learning outcomes. So you can start looking at those kinds of curriculum goals and competencies and design activities accordingly. But of course, Jadui Pitara will give you Anand Balvatika book, and of course, that is activities or playbook, and of course, Unmukh also. So there are material in Jadui Pitara, which will help you in realizing the curricular goals at the Balvatika. And for classes 1 and 2, content, we are not giving content overloaded textbooks. We are not going to give. So because policy is saying reduction of content. So we have to reduce the content. We have to emphasize more on art integrated, game integrated, play integrated learning, and more जो है emphasis need to be there for children to talk to each other, to do group activities, to interact with teachers and learn. You will find that children will learn more and more. राइट मैम, यहाँ पर हम जादुई पिटारा से एक और क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं बच्चों को जादुई पिटारा से जोड़ने के लिए, तो क्या इससे बच्चों में जो लोकल कल्चर है, जो उनके लोकल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, उसको किसी तरह से हेल्प मिलेगी नॉलेज पढ़ने में? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि चूंकि जादुई पिटारा आप अपने अपने लेवल पर भी कर सकते हो। अब आप आंध्र प्रदेश में मान लीजिए कोई CBSE स्कूल है और एक रूरल और सेमी अर्बन एरिया में है, और वहाँ पर वहाँ के कुछ खिलौने बहुत प्रसिद्ध हैं, या कर्नाटका के कोडनपल्ली जैसे उस जगह के खिलौने बहुत प्रसिद्ध हैं, तो आप उस तरह के खिलौने जो है वो लेकर आ सकते हैं, और वो खिलौने जो है वो बच्चे उन खिलौनों को देखकर सीखेंगे और ये जानना भी चाहेंगे कि कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, कब से शुरू हुए। तो इस तरह की बातें जो है हम जादुई पिटारा के थ्रू कर सकते हैं। तो क्राफ्ट्स, हम कुछ क्राफ्ट्स इकट्ठे कर सकते हैं जो कि जिससे बच्चे एप्रिशिएशन करें, जैसे मधुबनी आर्ट, कुछ अगर जादुई पिटारा हम बना रहे हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ जो है, या गुजरात की जो ढिंगरी डॉल है, तो हम इस तरह की चीज़ों को जो है जब हम जादुई पिटारा में रखेंगे तो बच्चे डेफिनेटली अपने कल्चर, अपनी रूटेडनेस के बारे में जानेंगे, और हायर स्टेजेस में हम कुछ और ऐसा जो है वो लेकर आ सकते हैं, ऐसे मटेरियल जो कि बच्चों को क्वेश्चन करने पे भी मजबूर करें और ज़्यादा एक्सप्लोर करने पर मजबूर करें कि हमारा जो है रिच कल्चर वो कैसा था और किस प्रकार से हमने पूरे देश, पूरे कंट्री में जो है, पूरे ग्लोब में जो है इस तरह की बातों को रखा सामने। जी मैम, है आई जस्ट वांटेड टू नो हाउ वी कैन एड्रेस हाउ टू एड्रेस कल्चरल डाइवर्सिटी एट foundational level, ma'am. So you see the National Curriculum Framework for Foundational Stage is talking about addressing this diversity. You will find lots of illustrations in the Foundational Stage Curriculum Framework, and in these illustrations you will find that
teacher is interacting with children, taking care of the context and culture of children. So whether it is a story of elephant, whether it is a story of spider, so you will find, or about foods, or about clothing. So those kinds of things are there. And whenever your children are in your class, suppose you are teaching in Tamil Nadu or Andhra Pradesh, and you have children from different cultural background, so you have to see that you have to see that you have to respect culture of each and every child, and see their context are addressed through your transaction. So if children are coming out with something in their own language, you need not to say immediately that no, speak in Hindi or speak in English. You just have to, you try to understand that what he or she is speaking. And if you are not knowing that language, maybe some peers, that the child's friends may help you, and then you can praise that child, and slowly you can bring that child to the familiar language in the classroom. So that you can do. मैम, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उसे इंटीग्रेट किया जाए इसमें? सो अभी तो ये हमारी फाउंडेशनल स्टेज है, बट ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है, जो ज़रूरी कॉम्पिटेंसीज होती हैं, स्किल्स होती हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, तो अगर आप टॉयज और गेम्स के साथ और पजल्स, तो डेफिनेटली वो क्रिटिकल थिंकिंग, वो लॉजिकल रीजनिंग, वो जब क्विज या पजल लगाएंगे तो वो लॉजिकल रीजनिंग के साथ इस टुकड़े को इस टुकड़े के साथ जोड़ेंगे, तो दे विल डेवलप लॉजिकल रीजनिंग, thinking skill, and this will help children in getting competency under AI when they are grown up and they need that. And of course, for disseminating Jadui Pitar, AI can have immense potential. So. मैम, जाते जाते क्या कुछ ऐसी बात है जो आप हमारे सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? कुछ ऐसा टिप्स या ब्रीफ में कुछ कहना चाहते हैं? बस हम आप सबके साथ एक ही बात हम ब्रीफ में कहना चाहते हैं कि whenever something new comes up, हमें बहुत ही दिक्कत होती है कई बार अपने ट्रेडिशनल मेथड से, अपनी पुरानी चीज़ों से शिफ्ट होने में, न्यूनेस की तरफ, लेकिन अगर हम शिफ्ट नहीं होंगे तो हमारे लिए शायद हम फिर बार बार हम जो है वो पुरानी चीज़ों को ही एक नए तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, हम पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। तो एक तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव माइंड सेट। तो सबसे पहले हमें अपने भी सॉफ्टवेयर को जो है, जिसको हम पॉजिटिव माइंड सेट कहते हैं, उसे हमें बिल्कुल उसे इम्प्रूव करना है, और हमें देखना है कि आज की ज़रूरत यही है कि हमारे बच्चे लाइफ स्किल्स और जो 21st सेंचुरी स्किल्स, जिसको हम सब बार बार कहते हैं कि 21st सेंचुरी स्किल्स आने चाहिए, वो क्या है? वो डिसीजन मेकिंग है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो क्रिटिकल थिंकिंग है, हाँ, वो ग्लोबल सिटीजनशिप की तरफ बढ़ना है। ये तभी हम बढ़ सकते हैं जबकि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम उन बच्चों में भी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें, उनके सामने अगर चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो वो उसको डील कर सके, उनके अंदर सर्वाइवल स्किल डेवलप करें, और उन्हें टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की बातों को आजकल हम बहुत जल्दी हम एंग्री हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, तो टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी वैल्यूज़, ऐसी स्किल्स जिसने सदियों से जो है हमें संभाल कर रखा है, आज हमें फिर से वो ज़रूरी है कि हम उन्हीं स्किल्स और उन्हीं वैल्यूज़ को फिर से एक्सप्लोर करें और अपनी कल्चरल रूटेडनेस के साथ जोड़ें। साथ में ऐसी भी बात नहीं कि हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और नई नई टेक्निक्स ना सीखें, तो वी नीड टू लर्न न्यू टेक्निक्स, बट साइमल्टेनियसली हमें जो है वो जुड़े रहना चाहिए अपनी कल्चरल रूटेडनेस से, क्योंकि वही हमारी स्ट्रेंथ है। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो वेरी मच रंजना मैम, यू हैव एक्सप्लेन्ड ऑल थिंग वेरी ब्यूटिफुली। थैंक यू सो वेरी मच मैम।